there is a one saying in that, unless you quit, you don't fail. बिल्कुल सर. During this probation only, you got a first gunshot. What was Yes. that? I'll not go into too much of detail in that, but it should suffice to say I made a lot of mistakes. I consider myself lucky कि मैं प्रोबेशन के दौरान ही वो गलती कर पाया था. जितनी आप गलतियां लिस्ट कर सकते हैं एक कागज पे सर, वो सारी गलतियां मैंने की थी. आई वॉज ओवर एक्जुबरेंट. आई वॉज पासिंग इंस्ट्रक्शन. एक लाइव ऑपरेशन में सर पहली बार मुझे भी थोड़ा सा मिलिटेंट दिखा था. एंड आई वॉज इन वन मैनर कमांडिंग वो छोटा सा टुकड़ा. एंड इट वॉज ए कोवर्ट काइंड ऑफ एन ऑपरेशन. वी वर ऑल I was doing everything that could have been wrong. मैं अकेला निकल पा रहा था सर, 2 आदमी लेकर के, and rest is history. I consider it was the biggest learning thing that happened to me, and especially what happened, it was during probation. उसके बाद से I was careful, I was much matured, and had it not happened, I would have not survived 3 years in the special forces. Yeah. I was very lucky in that manner, sir. Things happen when you're young. You are exuberant, you make mistakes, गलतियां हो जाती है सर. नहीं, but unless you make a mistake, you don't learn also, ना? Sir, हाँ, but very rightly एक बार I would like to believe so. Colonel Sangwan, he was the 2IC of our unit when that unit was raised. I met him. He was commandant AATS. उनसे जब मैं मिला, उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी. फिर he told me कि कश्यप, you know why you survived with a knee injury like that? 4 हड्डियों के बीच में से मेरी गोली निकल गई थी सर. वहां पे 2 आर्टरीज होते हैं. अगर वो आर्टरीज कट जाए तो अगर डॉक्टर वहां प्रेजेंट भी है, he cannot save you. Yeah. So he saw this and then he said, you know, Kashyap, why you survived that day? Nothing happened to you and you are fit and you have come here for parajumps. I had come for parajumps. So because there was no though wrong in your mind. You were not trying to do something galat kaam karke. You could have just killed people and shown, and that probably you would have got a Sena medal also उस दिन. But आप गलत काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए भगवान ने आपको बचाया. I seriously feel, sir, and I remember very distinctly, and I can relate to that. I keep telling people कि अगर आपके दिमाग में गलत नहीं है, आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो, तो God is going to protect you. Universe always help the yes when your thoughts are good. There is no doubt in that. In fact, I have interacted with many para officers. The first combat operation, everyone has accepted that they did some or other in the exuberance. Failure is the biggest tutor. I was about to say that. Yes. That's why failure is not a failure, sir, because it has given you lessons. But I believe that you became a medical category and then you got yourself upgraded, and that was a story by itself. Would you like to share? Sir, I am... all special forces guys are supposed to be a little crazy. So I am also a little crazy in that respect, sir. मुझे बताया डॉक्टर ने कि आप only way to get better is you do quadricep exercises. Okay. And आप मानोगे नहीं sir, every hour, every minute that I was awake, I was doing quadricep exercises for the next 3 to 4 months. And ऐसे इस हद से मतलब my knee just got okay, sir. Oh. In fact, जब पहले दिन जब the plaster was taken off, my thighs are pretty solid, मतलब. Yeah. And when the cast was taken off, it was like this, sir. मैंने देखा इतना बड़ा नी हो रखा है, and पूरा leg ऐसा है और पूरा नीचे मांस लटकता हुआ. Because 3-4 months the leg was completely immobilized, entire मांस नीचे लटकता हुआ, completely muscle based. I thought, my goodness, the entire time मेरे दिमाग में ये था कि मैं प्रोबेशन फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऑपरेशन में हो गया. आई वाज लकी कि मैं 40 किलोमीटर जो तब वो होता था, आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड दैट, बट इट वाज इन माय माइंड हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस. एंड मैं पागलों की तरह से उसके बाद आई गॉट इनटू क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज एवरी वेकिंग आवर. आई वाज डूइंग दैट. एंड सो व्हेन आई वाज ड्यू फॉर रिव्यू, पहला रिव्यू सर, आई वाज A3 कैटेगरी. A3 से यू कम ऑन टू A2, यू गेट अबाउट 6 months, एंड देन यू कम ऑन टू A1 इफ यू आर फिट. तो मैं आई वॉकड अप टू द डॉक्टर. आई वाज फिट. मैं तो उससे पहले दौड़ना, उससे पहले आई वाज इवन डूइंग ऑपरेशंस. आई वाज आउट, तब वो कुछ और ऑपरेशन चल रहे थे. आई वाज बिजी देयर. सो आई केम बैक. मैंने डॉक्टर के पास चुपचाप सर लाइन पे लगा था, बुलाया गया नाम. आई वेंट, केप्ट द फाइल, एंड आई स्टार्टेड डूइंग नी टू चेस्ट. No sir, and doctor, what are you doing? What are you doing? Stop. I did not stop. I would have pulled off at least 5 to 6 of them. What are you doing? मैं बोला, sir, this is my file. I was a gunshot injury.
गनशॉट वुंड, यू सी आई हैव फिट सर, मेरे से ज्यादा फिट इनमें से आप किसी को दिखा दो। एंड ही सेड जस्ट सिट डाउन, ही वेंट टू द रजिस्ट्रार एंड ऑल, इधर उधर करके आया, एंड विद इन 1 week आई वाज शेप 1 सर, एंड आई वाज बैक इन माय यूनिट। सो Oh my God. So I had opted for special forces just thinking कि सर ऑपरेशंस करूंगा, मजा आएगा, मतलब नहीं, यू हैव दैट काइंड ऑफ वो कि करना है। और जाकर के वहां पे आप कैटेगरी हो गए, आप चोट लग करके बैठे हुए, इट्स लाइक आप क्रिकेट खेलने गए तो आप बाहर 12th मैन हो गए। तो so I couldn't take that. I somehow I was lucky. Again, God has been kind, sir. That is what you said, madness in the para special forces officer. Madness has to be there, sir. In fact, ये विंस्टन चर्चिल का वो है, मतलब he was one of the that we believe. Winston Churchill did say कि mad men have got a place in war. जो वो Yeah. कर सकते हैं वो बाकी लोग नहीं कर सकते. That was the concept that led to the special forces, sir. Yeah, yeah.